Good evening, everyone. Today we will continue our series of general exceptions IPC, and in that series we will discuss two more sections today. That is section 77 and 78 Indian Penal Code. What section 77 says? Act of a judge when acting judicially. The person must be a judge. He must be acting judicially. He must be either using his power given to him by law or in good faith believes कि ये पावर मुझे लॉ ने दी. This is what 77 is. Person must be judge. Now, ये सब चीज़ें अगर अप्लाई हो रही हैं तो nothing is an offense if done by that person. Re-listen the previous four conditions. Now, who is a judge? Section 19 Indian Penal Code. Officially designated as a judge or a person with the power to pass a definitive judgment in civil criminal proceedings is a judge. सेकेंड थिंग आई थी एक्टिंग जुडिशियली. अपनी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है. Act should be of a judge when acting judicially. That is a person जुडिशियल कोर्ट होल्ड करते हुए अपनी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है. इट इज़ नॉट इन पंजाब और इन हरियाणा बट इन सम अदर स्टेट्स ऐसा होता है दैट एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जुडिशियल पावर्स दे दी जाती. यू कैन सी इन द हिंटरलैंड ऑफ हिमाचल ऑल्सो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है. सो ये सेक्शन 77 तभी अप्लाई होगा जब जज जुडिशियल कोर्ट को हेल्ड करते हुए जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है. लैंडमार्क केसेस अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार मुखर्जी. The facts of this case in brief are an accused officer was holding two offices: SDO, executive officer, SDM, SDJM, in fact, SDJM and SDM. Now, that officer ordered for the arrest of a person while he was holding an executive court. Now, power तो ये judicial की है. Being an executive officer, you were supposed to send the request to the judicial officer and then due procedure follow होके arrest होनी थी. But what he did, holding an executive court order for arrest, he was held liable. There's 77 की प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला उसे नहीं मिलेगा. 77 को प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है. In the case of R.P. Sharma versus Dayanand, that a judge when acting judicially, even though he's acting beyond his power, but when he's acting judicially and he's in good faith, the protective umbrella of 77 will apply. Now, ministerial staff कौन है? Section 78 बात करता है ministerial staff की. The persons, the clerk, the bailiff, the assistant, जो assistant देते हैं judicial officers को, उनकी powers को exercise करने में, उनके orders को execute करने में. Now, nothing is an offense which is done by a ministerial staff personnel while he is acting in discharge of the judgment or order passed by the court of justice. While that judgment or order is in force, irrespective, the court के पास power ही नहीं थी वो judgment order pass करने की, jurisdiction ही नहीं थी. Provided person ministerial staff वाला good faith में act कर रहा था, उसे knowledge ही नहीं थी कि concerned judicial officer is without power. मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं होगा ना तो जज कुछ नहीं कर सकता. कोर्ट में नायब कोर्ट नहीं होगा, अलमद नहीं होगा, रीडर नहीं होगा, स्टेनो नहीं होगा, जज क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं.
So this protective umbrella with 78 to the ministerial staff provided 77 में oral order भी covered है, तो जज ने oral order पास कर दिया, but 78 में सिर्फ written orders. So ministerial staff का बंदा तभी बच सकता है जब वो written orders पे act कर रहा है, judges के, judicial officer के. Now judges की protection के लिए सिर्फ 77 section of IPC ही नहीं है. There is a Judges Protection Act 1985 and there is a Judicial Officers Protection Act 1850. 1850 का एक्ट सिर्फ सिविल लाइबिलिटी से इम्यून करता है, 1985 का एक्ट सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यून करता है, और फॉर्मर एज वेल एज वर्किंग जजेस को इम्यून करता है फॉर सच एक्ट्स विच दे डिड, for the orders which they passed, for the judgments which they passed in discharge of their judicial duty. So these two acts are equally important. उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है, दैट इज दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इसमें लेट डाउन था दैट जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने के देयर इज अ ड्यू प्रोसीजर आफ्टर इंटीमेशन टू द सेशन जज हाई कोर्ट. विल go in detail of this when we'll do the CRPC. Thank you.